Good afternoon, students. Good afternoon. लास्ट क्लास कहाँ तक हुआ था अपना? Projectile motion intro was प्रोजेक्टाइल मोशन कहाँ तक करे थे हम लोग? For K is equal to square root cube. Ke as well as C. Second nature. Yeah. Motion in plane start करे थे हम लोग. So we are just done with the equation of motion and equation of projectile. We also did the displacement of the particle. चलो जल्दी से एक बार रिवाइज कर लो बेटा. प्रोजेक्टाइल क्या बोले थे हम लोग राइट नाउ? A body moving any two coordinate system, यानी XY प्लेन में हो या YZ में हो या XZ प्लेन में अगर मूव कर रहे हैं तो उसको हम लोग मोशन इन द प्लेन बोलते हैं. The best example is revolution of your earth around your sun. रिकॉर्ड हो रहा है ना? ठीक है चलो. So a body moving in any two coordinates. The best example for this one is revolving earth around the sun, an insect crawling on the floor, or the some of the best example. अगर एक particle x and y coordinate में है, मान के चलो p, from origin if it is a distance r, so position vector is represented by r bar is equals to xi cap plus yj cap. इसका magnitude angle वगैरह निकालना मैंने आप लोगों को बता दिया था. उसके बाद two special cases of the 2D dimension क्या है? Projectile है, circular motion है. Projectile motion हम लोग किसको बोलते हैं बेटा? Body when it is been projected at an angle other than 90 degrees is called projectile participation. So the best example is an arrow released from a bow is also a two dimension. A bomb released from an aeroplane, that is also best example. A bullet fired from the gun, that is also one of the best example right now. Assumptions for the projectile motion देखो बेटा, there is no resistance due to the effect of the curvature of the earth is neglected because earth is spherical. तो उसका जो curvature होता है ना, उसको हम लोग neglect करके problems करते हैं. Effect of rotation of the earth is also negligible because with respect to the problems on the surface of earth, rotation of the earth बहुत slow होता है, तो उसको हम लोग neglect करते हैं. Acceleration due to gravity is always in the downward direction and constant. तो g की value 9.8 meter per second square है. अगर he is asking us to take g is equals to 10, you can take 10 meter per second square and try to do the problem part. Now equation of trajectory हम लोग क्या कर रहे थे? A body is being projected at an angle theta other than 90 degrees with a velocity u. The moment it is being projected, I resolved it along x-axis and y-axis. Horizontal component of the velocity is u cos theta ux. Vertical component of the velocity is u sin theta. So when it is going from here on the projectile, somewhere at a point P, it is having both x coordinate and y coordinate. Acceleration of this particle along x-axis is 0 because this body is under gravity. And acceleration due to gravity is minus g because g is acting in the downward direction and you projected the body in the upward direction. So for horizontal motion, s is equals to vt use कर रहे हैं क्योंकि horizontal acceleration अपने पास कितना है? 0. So s is equals to vt के फॉर्मूला में यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए x है, horizontal velocity ux into t. So x is equals to u cos theta into t. So t is equals to x by u cos theta. वो हो गया मेरा equation number 1. उसी तरह से vertical displacement निकालने के लिए हम लोग I'm using the second kinematic equation. Sy is equals to uy into t plus half into ay into t square. Sy is nothing but y. Uy is equals to u sin theta. तो ये u sin theta into t plus half into g. Acceleration minus g. Simplify कर लो. I got the value as y is equals to u sin theta into t minus half g into t square. From equation 1, get the value of time, substitute in this one and simplify it. You are getting the answer as y is equals to tan theta into x minus gx square by 2u square cos square theta, or 1 by cos theta is nothing but secant square theta. ऐसा भी लिख सकते हो. This is in the form of y is equals to ax minus bx square. The equation of trajectory of projectile is what? Parabolic, because it is similar to the equation of parabola. तो y is equals to tan theta x minus gx square by 2u square cos square theta में tan theta को हम लोग a मान के चल रहे हैं
और g 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को b मान के चल रहे हैं, तो ये हो गया tan थीटा और b हो गया g by 2u स्क्वायर into cos स्क्वायर थीटा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल अगर मुझे लिखना है तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, लाइन जॉइनिंग फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। दिस इज r bar इज इक्वल टू xi कैप प्लस ऑफ योर y j कैप। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया xi कैप प्लस y j कैप। So x is equal to ux into t, that is equal to u cos theta. And vertical component, if I'm talking about right now, for vertical velocity at any time, vy is equal to uy plus ay into t. So vy is equal to uy value is u sin theta minus g into t. So for vertical displacement, y is equal to u sin theta t minus half gt square. So simplifying it and substituting the values, I got the value of your r part relation. That is nothing but of your displacement of the given condition. So let us try to talk about the velocity at any height if I am trying to talk about the relation. So next side heading is velocity. Velocity at any height. Velocity at your any height. ठीक है? So we need to calculate the velocity at your any height के condition में होना चाहिए. At any height मतलब क्या? Basically जो condition मैंने लिया था यहाँ पर, इसकी यहाँ पर velocity कितनी होगी? So it is having both the velocities बेटा, एक तो x axis velocity होगा और एक y velocity भी होगा इसके लिए। तो इस पॉइंट पे जो velocity आएगी इस डायरेक्शन में आ जाएगी, this is nothing but of your v। तो इसके लिए एक horizontal component of velocity आ जाएगी vx और एक vertical component of the velocity भी आ जाएगी यहाँ पर vy। तो v is equal to पूरे हो जाएंगे, तो पूरे हम लोग निकालेंगे पहले vertical velocity at any instant अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो vx कितना हो जाएगा बेटा, velocity along horizontal direction is equals to your ux, so that will be equal to u into your cos theta because horizontal में acceleration नहीं है, so v is equals to u plus at, a is nothing but 0, so vx is equals to ux, that will be equal to u cos theta. Vertical direction में vy square is equals to uy square plus this will be equal to minus of 2g into h by, because acceleration is minus of g. This is equation number 2. uy is equal to how much for me beta? This one is u into your sin theta, vertical velocity of the part, minus of 2g into your h. So this is my equation number 2. This is my equation number 2. Now squaring and adding the equation 1 and 2. Squaring and adding with equations 2. With equation 2. What we get? We get square this equation better. Vx square plus vy square is v square. U square cos theta if I am taking right now. This one is nothing but a few. Sin square theta plus cos square theta is nothing but 1 minus 1. So अगर ये हो गया तो कितना बन जाएगा? V is equals to under root of your, this will become for me u square minus 2g into your h. आया सभी को ये? इन दोनों को स्क्वायर कर रहा हूँ बेटा, vx square and as well as of your vy square part of relations. So squaring and adding, squaring 1 and adding with your equation 2. First one को square कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर लिख देता हूँ देखो बेसिकली, वरना आप लोग को परेशानी हो जाएगी. So squaring equation 1. So square the equation 1 right now. So this one will become for me vx square is equals to ux square is equals to u square cos square theta, and substitute this value in your right now and adding with your equation 2. This is your equation number 2. Yani vx square plus of your vy square is equals to how much? Vx value is how much we got right now? This one is u square into your cos square theta plus vy square value is equal to how much for me? Vy square value is this one. So it is nothing but of your u square sin square theta minus of 2g into h. U square common, cos square theta plus sin square theta is nothing but 1. Vx square plus v square is nothing but how much for me? V square, that is equals to u square minus 2g into h. So from this one, if I am simplifying the relation, v is equals to under root of your yoga u square minus 2g into your h. So velocity at any instant of your time, the formula is for me how much for me? V is equals to under root of your u square minus of your 2g into your h. निकला सभी को ये? यहाँ पर velocity ये जो v होगा ना, तो this v is nothing but equal to how much for me? vx I cap plus of your vy j cap. ऐसा इसका magnitude कर लो, so we'll be getting the answer for that one. So I got velocity at any instant of your height is nothing but v is equal to under root of u square minus 2g into your h. Is it clear for everyone? Yeah, सभी को? Yes,
sir. पक्का? Yes, sir. ठीक है ना? नेक्स्ट इसी के अंदर देख लो, वेलोसिटी at any point, velocity at your any point, velocity at your any point, velocity at any point मतलब क्या? देखो यहाँ पर इसके अंदर जब हम लोग जा रहे हैं प्रोजेक्टर में, कोई भी पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर हाइट बोल के नहीं, कोई भी पॉइंट, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कोई भी एक पॉइंट के लिए अगर हम लोग वेलोसिटी ले रहे हैं तो हम लोग कैसे लिखेंगे? वेक्टर्स में लिखेंगे हम लोग. सो vx will be equal to how much for me? vx is equals to your how much for me? ux, that will be equal to your u into your cos theta. vy is equals to how much for me? uy minus of g into t. uy is how much for me? u into sin theta minus g into t. So therefore velocity at any instant matlab v bar is equals to vx into your I cap plus this one is nothing but vy into j cap. vx की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? u into your cos theta. This one is nothing but of your I cap plus vy value is how much for me? u into sin theta minus g into t j cap. G into t j cap. So this will be the velocity v bar. So that is the answer for the velocity. So v bar is equals to u into your cos theta into your I cap plus u into sin theta minus g into t j cap. So this is the velocity at any instant of your time or at any instant of your point. Clear है सभी को? Sir. We got the two velocities. Velocity at any height and velocity at any point. Clear है? Sir. Yes, sir. पक्का? Sir. Sir, doubt. सहिस्ता जी सर। समझ में आया? बहुत दिन हुआ आप नहीं आए क्लासेस को, क्या बात है? नहीं सर, आई नहीं थे सर। क्लासेस को बहुत दिन एब्सेंट थे आप, क्लासेस सुन रहे हैं रेगुलरली? हाँ सर सुनी, यूट्यूब पे भी लाइव था ना तो वहाँ पे गई थी। अच्छा, जी तो वेलोसिटीज आ गए एट एनी पॉइंट एंड एट एनी हाइट पार्ट ऑफ रिलेशन. नेक्स्ट वन लिखते हैं हम लोग, नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, टाइम ऑफ फ्लाइट. नेक्स्ट वन इज नथिंग बट ऑफ योर टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या बेटा? ऊपर जाके फिर वापस नीचे आना, उसको पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, है नहीं? ठीक है, देखो ये वाला देखो कैसा होता है. यहाँ पर से अपने बॉडी को फेंका, यहाँ से फेंका तो यहाँ पर जाते जाके 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 फिर वापस ग्राउंड पे आया. तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम ऑफ एसेंट, फिर यहाँ से यहाँ तक नीचे आने के लिए टाइम ऑफ डिसेंट. यानी टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट विल बी बोथ विल बी द सेम. सो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए अगर मैं लिख रहा हूँ बेसिकली, so t will be equal to time of ascent plus time of descent. Time of ascent is nothing but ऊपर जाने के लिए vertical component of velocity. Vertical component of velocity कैसे लिखोगे आप? uy by your g प्लस ये भी हो गया uy by your g. तो ये बना कितना मेरे को? 2 times of your uy by your g. So this is your time of your flight. So time of flight is how much for me? T is equals to 2 times of vertical component. Vertical component of velocity बता सकता है कोई कितना है? ये भाई है. Vertical component of velocity is how much for me? U sin theta. यानी टाइम पीरियड इसका जो फॉर्मूला आएगा बेसिकली, so t is equals to 2u into sin theta divided by g. So this is your time period का फॉर्मूला. So time period of the flight का फॉर्मूला कितना है? t is equals to 2u into sin theta by your g. T is equals to 2u into sin theta by your g part of relation. उसी तरह से मैक्सिमम हाइट बताओ, मैक्सिमम हाइट क्या हो सकता है? मैक्सिमम हाइट कैपिटल H प्रोजेक्टाइल के लिए
ये अपना प्रोजेक्टाइल है, ये वाई एक्सिस है, ये अपना एक्स एक्सिस। तो अगर एक पार्टिकल हम लोग ने प्रोजेक्ट किया तो ये ऐसा जाके प्रोजेक्टाइल होते हुए ग्राउंड पे आ जाए। यहाँ से यहाँ तक जो है इसको हम लोग मैक्सिमम हाइट मान के चल रहे हैं, यहाँ पर h मैक्स, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक जो गया उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, टाइम ऑफ एसेंट। इसको बोल रहे हैं हम लोग टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर जाने के लिए। यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, टाइम ऑफ योर डिसेंट। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, h मैक्स का फॉर्मूला जैसा कैनामेटिक्स में लिख रहे थे हम लोग, h max is equals to, this one is nothing but of your uy square by your 2g, uy square by divided by your 2g। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना हो जाएगा बेटा, अगर कोई बॉडी यहाँ पर प्रोजेक्ट कर रही है विद वेलोसिटी u, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी है u cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी है uy is equals to u into your sin थीटा। तो therefore h max is equals to uy की वैल्यू कितनी है, u into your sin थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय योर 2g। यानी फॉर्मूला आ गया मेरे पास, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज u square sin square theta divided by 2g, direct formula for the time of your flight. So for the time of flight in a projectile, the maximum height is calculated with the formula h max is equals to u square sin square theta divided by your 2g। क्लियर है सभी को, Yes, sir. क्लियर है। यहाँ से ओरिजिन से लेके ये पॉइंट पे आने के लिए मान के चलो ये है, वो टू ए इज नोन एज रेंज, वो टू ए इज नोन एज नथिंग बट व्हाट बेटा, रेंज। अगर मुझे रेंज निकालना है, नेक्स्ट वन इज नथिंग बट ऑफ योर रेंज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर कैपिटल R। रेंज इज नथिंग बट व्हाट, वो टू ए, रेंज इज नथिंग बट इक्वल टू वो टू ए, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो टू ए विल बी इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, horizontal distance wo to a is equals to horizontal velocity into time of flight, time of flight है కదా। So from here to here, when it is going from here to here, the time taken to go up and time taken to come down, so that is the total time taken to come to the point A is known as time of flight. So horizontal velocity into time of flight will give me the horizontal distance. That horizontal distance is represented by your OA, that is nothing but range. So range का formula क्या होगा, R is equals to horizontal velocity is represented by ux into time is nothing but t। ux की वैल्यू कितनी है मेरे पास, u cos थीटा। देख लो डायग्राम में, डायग्राम में देख लो बेसिकली एक बार जल्दी से। डायग्राम में अगर मैं देख रहा हूँ बेसिकली, देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है मेरे पास, u cos थीटा। सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कितना अभी बताया था मैंने, 2u sin थीटा बाय g। तो इसको यहाँ पर डालो, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय योर g, ठीक है ना। तो ये बन गया मुझे कितना, 2 इंटू योर u स्क्वायर sin थीटा इंटू योर cos थीटा डिवाइडेड बाय योर g, ठीक है ना। 2 sin थीटा into cos थीटा is nothing but बेटा how much, sin 2 थीटा। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं बेसिकली, दिस वन इज नथिंग बट ऑफ योर u स्क्वायर into sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। 2 sin थीटा into cos थीटा, बेसिक मैथमेटिक्स है, 2 sin थीटा into your cos थीटा is equals to how much for me, sin 2 थीटा। ये बेसिक मैथमेटिक्स है, याद रख लो। 2 sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, 2 sin थीटा into cos थीटा, यानी रेंज का जो फॉर्मूला आ गया मेरे पास, range is equals to horizontal range is equals to your u square sin 2 theta divided by g। क्लियर है। तो कितने फॉर्मुले आए देखो पूरे, आज हम लोग को अपने कंडीशंस में वेलोसिटी एट एनी हाइट, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कितना है, t is equals to 2u sin theta by g। उसके बाद मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला t max is equals to u square sin square theta by your 2g। उसके बाद रेंज, रेंज का फॉर्मूला कितना है, r is equals to u square sin 2 theta by g। आइए आर मैक्सिमा होना बोले तो मुझे क्या होना चाहिए बताओ जल्दी से। अगर आर मैक्स होना है तो साइन 2 थीटा वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमा। सो फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज साइन 2 थीटा मस्ट बी इक्वल टू मैक्सिमा।
That means this 2 theta will be equal to how much for me? 90. For what value? Sine value is 90 1. degrees. Sine 90 is 1. So sine gets cancelled. 2 theta is equals to 90. That means if theta is equals to 90 divided by 2, that is equals to 45. That means if theta is equals to 45 degrees, we are getting the maximum range. Therefore, R max is equals to what is the formula? U square into sine 2 into theta value is 45 divided by your G. 2 into 45 is 90, sin 90 is 1. So R max का formula कितना बन गया? R max is equals to your U square divided by G. So this is the maximum range का formula. R max is equals to U square by your G. ठीक है? Yes, sir. Yes. Clear है? Yes. Yes, sir. Next slide. Relation between H max and R max. So the H max का formula क्या है बेटा? H is equals to U square into sine square theta. Theta value is 45 degrees divided by your 2G. ठीक है ना? अब देखो, not H max, H and R max. So for theta is equals to 45 degrees. For theta is equals to 45 degrees. H value is equals to how much बेटा? U square sin 45 is 1 by root 2. Square का value हो जाएगा 2. So 2 into this will become for me 4G. So H is equals to U square by 4G. But U square by G is how much for me? R max. So I can write here right now. H is equals to R max divided by 4. Yani R max is equals to 4 times of your maximum height. So this is the formula we need to. Okay, relation between your maximum height, that is nothing but of your H and of your R max. For theta is equal to 45 degrees, H is equal to U square sin square theta 45 degrees by 2G. So H is equal to U square by 4G. And we know that already range formula. Range formula is how much for me? R is equals to your U square into your sine 2 into 45 degrees divided by G. So that will become for me how much? U square by G. And this one is nothing but R max. R max is U square. So this U square by your G value, I'm writing it as R max. So H is equals to R max by 4. So R max is equals to 4 times of your maximum height H. That is nothing but of your capital H part of the relation. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So, see this point, beta. There are two angles. There are two angles of projection. There are two angles of projection for which the range is same. For range is same. Okay. Such angles are called complementary angles. Complementary or angles or supplementary angles. What are that angles? Theta and 90 minus theta. These are your complementary angles. देखो, अगर theta लेके चल रहा हो, R is equals to U square into sine 2 into this theta divided by G. Then R dash is equals to, if I'm using this value, this one is U square into sine. This one is nothing but 2 into 90 minus theta divided by your G. So that will be equal to how much for me? U square into 2 into 180. Sine 180 minus theta is nothing but how much for me? Sine 2 theta. So this one is nothing but of your sine 2 theta divided by G. So this is your R dash, isn't it? 180 minus 2 theta. This is nothing but how much for me? U square sine 2 theta. So therefore I can write here R dash is equals to R for what angles? Complementary angles, that is theta and 90 minus theta. The range will always be remaining for me same. Okay now? Okay. Yes, sir. Yes, sir. The same way,
time of flight will be equal to how much? Can anyone tell me? Time of flight for complementary angles. Time of your flight. Let's see. For angle theta, T1 is equals to 2u into sine theta divided by your g. Second one. For angle 90 minus theta, T2 will be equal to 2u into sine 90 minus theta divided by g. So that will be sine 90 minus theta is cos theta. So this one is 2u into your cos theta divided by g. So this is the value of t. So therefore, T1 into T2 will be equal to how much? T1 is 2u into sine theta divided by g into T2. T2 is nothing but 2u into your cos theta divided by your g. So what I'll be getting right now? 2g is right now here common. This one is nothing but how much for me? U square into 2 sine theta into cos theta is how much again for me? Sine 2 theta divided by g. Antena g square kada. I have taken 1 2 common right now here. So this one 2 by g as usually right now here. So it is u square. Then 2 sine theta into cos theta is sine 2 theta divided by g. Now u square sine 2 theta is nothing but what beta? Range. So I can write here T1 by T2 will be equal. T1 into T2 will be equal to your how much for me? 2r divided by g. Clear? So this is the relation between the two complementary angles. So for complementary angles, I can even write the range in terms of your time periods. So R is equals to T1 T2 into G divided by your 2. So this will be the range in terms of your time periods. That is nothing but of your time of flights. Okay, na? So for the time of flight, for the angle theta, T1 is 2u into sine theta by G. For angle 90 minus theta, complementary angles, T2 is equal to 2u into sine 90 minus theta divided by G. So this sine 90 minus theta is cos theta. I'm multiplying the equation 1 into, so T1 into T2 is equal to 2u sine theta by G, 2u sine theta by G. Now see this one, u into u, this is nothing but u square. Sine theta into 2 cos theta will be equal to sine 2 theta divided by G. So this one is u square sine 2 theta by G is nothing but range. So T1 into T2 is equal to 2r by G, or r is equal to T1 T2 into G by your 2. Anything is fine for me for understanding the given condition. Is that point clear for everyone? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया सभी को? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? Clear, sir. Yes, sir. समझ सुनाई नहीं दे रहा मेरे को. वॉइस मेरी छोटी है क्या? ठीक है ना? अपनी मटेरियल निकाल के आज प्रोजेक्टाइल्स पढ़ो एक बार और कुछ प्रॉब्लम्स करो, सॉल्व एग्जांपल्स जो भी इसमें दे रखे हैं, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू प्लीज लेट मी नो. ठीक है? Yes, sir. Okay, sir. Yes, क्लियर? Yes, Yes. sir. Yes, sir. चलो, आई एम क्लोजिंग द सेशन बेटा. आज के लिए काफी है, कल देखेंगे. ओके, बाय Okay, बेटा. sir. Bye, sir. thank you, sir.